And then there are centuries that win matches. But very few can claim to have scored centuries that shifted paradigms. In Indian cricket, it happened in 1983, when Kapil Dev rescued India at Tunbridge Wells. Remember Tunbridge Wells? That unforgettable 175 in a World Cup match? Then 34 years later, it happened again. Once again in England, a score in excess of 170, this time too in a World Cup. And once again, it changed Indian cricket. Or, to be precise, Indian women's cricket. One courageous knock by Harmanpreet Kaur that not only gave India a win for the ages, but accelerated the pace of change in women's cricket in the country. Semi-final of the tournament began, where India was pitted against their forever kryptonite, Australia. And I say kryptonite because by this time, India and Australia had met in 42 women's ODIs and the Aussies led the head-to-head by 34-8. The most recent loss came a week ago in the same tournament. So when Harmanpreet walked out to bat at 35 for 2, there must have been some people wondering whether a familiar script would unfold in Derby. Not today, said Harmanpreet in the most vehement of ways. Everyone knew about Harmanpreet's ability to hit big, but nobody till then had seen the kind of fury that she unleashed that day. On that bright afternoon in Derby, she belted an Australian bowling attack that had 3 names in the tournament's highest wicket-takers list for 24s and 7 sixes. The way she shifted gears that left everyone stunned. 68 runs came in the first 75 balls, where she steadied the innings with Mithali and Deepthi. And then Harmanpreet went Thor mode. 103 came in the next 40 deliveries. Don't forget, this was a woman batting in pain because of a finger injury that she was carrying. Look of determination on Harman's face told you nothing was going to stop her that day, and nothing did. Knock changed something in Indian cricket. It turned heads. It made people sit up and take notice. It single-handedly, if I may say so, took the women's game to the next level. There was no way anybody in any corner of the country would not have heard of it. Surely that performance was a big factor in the overall viewership for the final, reaching a record high of 126 million in India. ब्रेकफास्ट जैसे बगैर खाए आपने 170 बनाए, तो खाए तो कितने बनाते आप? एक्चुअली सर उस टाइम पे मैं मेरी जो शोल्डर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी. एक्चुअली बहुत मेरी इंजरी डे बाय डे बढ़े जा रही थी. थ्रो नहीं हो पा रही थी और बैटिंग में भी मुझे कुछ शॉट्स लगाते हुए दर्द हो रहा था. तो मुझे उस दिन आई थिंक मैंने 2-2.5 घंटे सुबह 5 बजे से उठ के फिजियो के रूम पे थी कि प्लीज़ मेरा शोल्डर ऐसा फिक्स करो कि आज बिल्कुल मुझे ग्राउंड पे दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले के सारे मैच मैंने पेन में ही खेल रही थी. वार्म अप टाइप रूम पे करते हैं, अदरवाइज क्योंकि बारिश हो गई एकदम से मैच स्टार्ट हो जाएगा, वार्म अप का टाइम नहीं मिलेगा. मैंने अपना एक कॉर्नर लिया. आई वाज सिटिंग, आई वाज थिंकिंग, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा मैच था, उसके बाद मुझे ओपन करना था. तो मुझे भूख तो क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. मैं बस अपना साइड पे बैठी थी और सोच रही थी कि यार, एक तो जैसे मैंने बोला उस मैच में मुझे अपना सारा बचपन रिकॉल हो जा रहा था, कैसे मैंने खेलना स्टार्ट करा, कहाँ पे जाके मैंने प्रैक्टिस करी, किस तरीके की प्रैक्टिस करी. तो मेरे बैकअप पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैंने बहुत हार्ड वर्क करा हुआ है, आज रिजल्ट हमारे फेवर में होगा, अच्छा होगा. खाने का तो मुझे याद ही नहीं कि खाना तो मुझे बाद में जब मैच में क्रैम्प्स आने स्टार्ट हुए, देन आई रियलाइज कि आई डिडंट ड्रिंक वाटर, आई डिडंट ईट एनीथिंग, और मैं ऐसे ही खेल रही हूँ. उसके बाद जाके समझ में आया कि यार मैंने कुछ खाया ही नहीं. Yes, there have been centuries, several of them bigger than Harman's 171, but none of them could possibly claim to have changed cricket the way this one did.